हेलो गाइस, स्वागत है आपका डिजाइन विद साईराज इस हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू यूज हेलिकल स्वीप कमांड इन पीटीसी क्रियो सॉफ्टवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। After opening part design in creo software, you will see this interface. Now click on this small arrow and this is our helical sweep command. Now click on helical sweep command. ओके, सबसे पहले मैं एक स्केच निकालूंगा। उसके लिए मैं क्लिक करूंगा डिफाइन पर, डिफाइन एन इंटरनल स्केच, क्लिक ऑन इट। नाउ मैं एक प्लेन सेलेक्ट करूंगा। आई एम चूजिंग फ्रंट वन एंड सिंपली क्लिक ऑन स्केच। ओके, अब इस प्लेन पे मैं एक स्केच निकालूंगा। इसके लिए मैं यूज करूंगा लाइन कमांड और सिंपली एक लाइन निकालूंगा। ओके, सो हमारी एक प्रोफाइल रेडी हो गई। अब मैं एक पाथ निकालूंगा। पाथ निकालने के लिए मैं यूज करूंगा सेंटर लाइन का। ओके, सो दिस इज अवर प्रोफाइल एंड दिस इज अवर पाथ एंड सिंपली क्लिक ऑन ओके। नाउ अगेन क्लिक ऑन स्केच और यहाँ पे मैं छोटा सा सर्कल निकालूंगा। ओके, एंड टू स्टॉप द कमांड जस्ट प्रेस एस्केप। नाउ क्लिक ऑन ओके। You can see if you want to reverse direction, just double click on this arrow. Okay, and if you want to change pitch distance, you can change it from here. For example, I'm typing 35 like this. And if you want thicken sketch, then just click on thicken sketch and you will see the pipe will get hollow. If you want left-handed rule, just click on left-handed rule. And if you want right-handed rule, just click on right-handed rule. You can see right-handed rule. So it starts from here. And if you click on left-handed rule, it starts from here. And if you want surface, just click on surface. You can see single sheet. Okay, like this you can use helical sweep command in PTC Creo software. Thanks for watching guys, keep supporting.